हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी लेट्स गेन एजुकेशन को। चलतु आम देखा आज बी.एड फर्स्ट सेमिस्टर जो आम इंग्लिश पेडागोजी रही तार देखी दिंतु कौन ना डायरेक्ट मेथड देखी दिंतु मो रही चलते देखी ना डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। जो हमारा डायरेक्ट मेथड कौन ना आम जो डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो अच्छे डायरेक्टली केमती यूजिंग करवा जो आम जो टारगेट अच्छी जो लैंग्वेज उपर टारगेट अच्छी से डायरेक्टली करवा। देखो हियर द टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश ए टीचर डज नॉट यूज द मदर टंग इन द क्लास नॉर आर द स्टूडेंट्स अलाउड टू यूज इट। This method is totally in contrast of translation method. A huge number of teachers are in favor of this method in teaching English. Webster's in New International Dictionary has written देखो जो आम वेबस्टर रही कौन ना लिखिं ना न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी लिखिं। तो आगू जावा पूर्व आपण माने को रिक्वेस्ट करूची लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु आ चैनल को जदी आपण माने सब्सक्राइब करि नांती तो सब्सक्राइब करि दियंतु। नेक्स्ट देखंतु कोन रहिची हमर रहिची देखंतु डायरेक्ट मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। हमर जो डायरेक्ट मेथड अछि जो ए जो मेथड टीचिंग रो रहिची नाटा कोन ना फॉरेन लैंग्वेज रहिची स्पेशली ए मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन डिस्कशन एंड रीडिंग। ए थ्रो रे हमें कोन करबा ए जो लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज थ्रो रे हमें कन्वर्सेशन डिस्कशन एंड रीडिंग हमें करबा इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज ऑफ पीपल्स लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन। ए जो अछि कोन ना पीपल्स लैंग्वेज जो अच्छी एटा कौन विदाउट ट्रांसलेशन द्वारा आम करवा। नेक्स्ट देखो कौन रही ना द टीचर्स टीच वर्ड्स बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट or picture or by performing actions, but some experts don't consider it a method at all. According to them, it's a principal system that operates through many methods. Next चलो देखा कौन रही। नेक्स्ट देखो कौन रही ना आम डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन thought and words using this method. A learner think and speaks using the same medium. एथरे कौन हुए ना आमर जो रही जो थिंक जो भावना रही आ स्पीक जो टॉकिंग रही से कौन से जो यूजिंग करती तो यहाँ कौन ना सेम मीडियम ही करती। नेक्स्ट देखो ओराल रही जो आम स्पीकिंग प्रैक्टिस जोटा कि आम प्रैक्टिस करिया ओराल प्रैक्टिस कौन ना दिस मेथड एम्फासाइजेस ऑन ओराल प्रैक्टिस फॉर एवरीवन। ये जो मेथड टी आम एम्फासाइज होती कौन ना ओराल प्रैक्टिस समस्त जो ओराल प्रैक्टिस होती। देखो तो बहुत कष्ट होती आमर जो पीडीएफ टा बनवाई नोट बनवाई तो आपने लाइक आ सब्सक्राइब कर दिंतु जो मैंने भी न करिसेंते। नेक्स्ट देखो कौन अच्छी आमर ना फंक्शनल ग्रामर अच्छी एथरे कौन रही ना दिस मेथड डज नॉट पुट एम्फासिस ऑन थियोरेटिकल ग्रामर द मेन स्ट्रेच इज ऑन फंक्शनल ग्रामर। एथरे रही नेक्स्ट देखो कौन ना नो यूज ऑफ मदर टंग। एथरे कौन रही ना आम जो मदर टंग को नो यूज दि जाए मैंने यूज न करने दी जाए। देखो एथरे कौन रही ना देयर इज द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ मदर टंग देयरफॉर लर्नर्स मेन फोकस इज ऑन लर्निंग द फॉरेन लैंग्वेज रही। नेक्स्ट देखो कौन रही ना आमर लिमिटेड भोकाबुलारी रही। देखो ये कौन रही ना दिस मेथड एडवोकेट्स द यूज ऑफ लिमिटेड भोकाबुलारी डेली यूज वर्ड्स द वर्ड्स मस्ट बी फ्रॉम रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द लर्नर्स। एथरे कौन ना रिक्वायरमेंट और जो लर्नर अच्छा जो स्टूडेंट अच्छा जो नीड आवश्यकता यह बहुत आवश्यकता रही जो आमर भोकाबुलारी रही। नेक्स्ट देखो कौन रही आमर ना सेंटेंस एज द यूनिटी ऑफ स्पीच। एथरे कौन रही ना हियर द यूनिटी ऑफ स्पीच इज ए सेंटेंस there is the emphasis on speaking the complete sentence. एटे कौन या एम्फासाइज करी जो स्पीकिंग अच्छी आमर एटा कौन ना कंप्लीट सेंटेंस उपर फोकस करुच्ची। नेक्स्ट देखो कौन रही आमर ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रोची एटा कौन ना आमर डायरेक्ट मेथड उपर बेस करुच्ची। नेक्स्ट देखो कौन रही आमर नेक्स्ट देखो जो एडवांटेज रे देखो कौन रही ना एथरे कौन रही द फोकस इज ऑन ओरल प्रैक्टिस। एथरे कौन ना आमर ओरल प्रैक्टिस उपर फोकस रही देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इम्प्रूव। एथरे कौन हुए ना आमर जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी एथरे इम्प्रूव होता है ओरल प्रैक्टिस द्वारा। नेक्स्ट रही कौन ना इन टीचिंग वोकाबुलारी सच एज वर्ड्स इडियम्स दिस मेथड इज गुड। ए टीचिंग रे कौन हुए एडवांटेज रे आमर जो वोकाबुलारी जो सच एज वर्ड्स जो इडियम अच्छी दिस मेथड इज गुड। ए मेथड रे आमर इडियम आ वर्ड गुड़ा जोड़ा भल होता है। नेक्स्ट देखो कौन रही as there is a direct relation between thought and expression, it helps the learners in having good fluency. Using direct method, a teacher helps the student having good command over English. एथरे रही। नेक्स्ट देखो कौन ना इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। एथरे कौन हुए ना जो आमर टीचर अच्छी से प्रोसीड कौन करती ना पर्टिकुलर जनरल को ये प्रोसीड करती एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एटे कौन हुए ना कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पर्यंत होता है। नेक्स्ट देखो कौन रही ना इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश इजियर एंड मोर प्लीजेंट। आपण मैंने भी जदि चाहूँगी यार स्क्रीनशॉट नहीं नोट बनई पारे। देखो नेक्स्ट कौन रही ना ए टीचर यूजेस वेरियस इमेजेस एंड पिक्चर्स टू इलुस्ट्रेशन हिज और पॉइंट। नेक्स्ट देखो कौन रही आमर ना दिस मेथड क्रिएट्स द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एथरे कौन रही ना ये मेथड आमर कौन क्रिएट करे ना सुटेबल एनवायरनमेंट। एथरे कौन ना जो आमर रही एनवायरनमेंट जो परिवेश रही सुटेबल परिवेश भितर आमर जो इंग्लिश लर्निंग जो अच्छी
ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ students learn to speak complete sentence without any hesitation, so they get confidence with command over good English. देन देखो आम कौन रही ना डिसएडवांटेजेस रही एथे कौन रही देखी नि कौन रही ना ओनिंग टू ओवर एम्फासिस ऑन ओरल प्रैक्टिस द अदर स्किल्स नेमली रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। देखो एथे रही नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन रही यार ना average and below average students especially from rural background find difficulty to grasp the thing taught via this method. Next रही कौन ना this is an expensive method as the teacher is to use some aids for learning some for aids for teaching रही। then रही for this method competent teachers must be there, but there is the dearth of good English teachers in the country. Incompetent teachers can use this method successfully. Then रही कौन लास्ट वन ना इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग दिस मेथड इज कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल। एथरे कौन रही जो अर्ली स्टेज रही जो शिक्षाटी लर्निंग ये कौन एथरे कौन ना जो मेथड टी आमर कम्प्लीटली अनसक्सेसफुली देछि। नेक्स्ट देखिबा चलंतु कौन रही आमर देखो तार आ गोटे पॉइंट रही जाइतिला देखो कौन रही ना द बैकग्राउंड एट होम मस्ट आल्सो बी फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंडली फॉर दिस मेथड द स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस मेथड। ये इतरे कौन कहउचंदी ना इतरे कहउचंदी जे जो मानकर माने बैकग्राउंड फैमिली जो रहिचंदी पेरेंट्स से माने एटा जदी लैंग्वेज स्पीक करूचंदी तो तांको पिला मानन पई कोन होबो ना बेनिफिट रहइबो एटा माने इंग्लिश लैंग्वेज हमरो ए जो मेथड टी तांको पई बेनिफिट बोली रहिबो। नेक्स्ट देखो कौन रही ना डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग्स दिस मेथड इज गुड बट द टीचर मस्ट बी एबल टू मॉडिफाई इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल क्लास। नेक्स्ट देखो कौन रही ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एथे कौन रही ना द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो जीटीएम रही हमर यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज टीईएफएल फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ये कौन करे ना फोकस करे का रीडिंग और राइटिंग पर देखो देन कौन रही ना लैंग्वेज इज टॉट थ्रू ट्रांसलेशन मेथड कंट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग द नेटिव टंग टू द लर्नड लैंग्वेज। एटारे हमरो कौन हुए ना लैंग्वेज इज टॉट थ्रू ट्रांसलेशन आम जो लैंग्वेज रही ना एटा का थ्रू आम ना ट्रांसलेशन जो मेथड थ्रू आम कौन करता एटा को पढ़ी था कंस्ट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग द नेटिव टंग एटा क्या द्वारा ना आमर नेटिव टंग जो अच्छी आमर मातृभाषा ता द्वारा आम एटा को लर्न करें लैंग्वेज टाक। नेक्स्ट रही कौन ना जीटीएम फोकसेस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर वोकाबुलरी एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशंस ऑफ द नेटिव language to English. The method requires few resources to teach normally just the use of textbooks or translated passages. एतरे कौन हुए ये कौन करे जो मेथड टी हमर रिक्वायर कौन करे ना few resources to teach ये कौन करे किछि रिसोर्सेस को आवश्यकता करे नॉर्मली जस्ट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स ये कौन करे ना हमर टेक्स्ट बुक यूज करे ट्रांसलेटेड पैसेजेस ला ये सब को से कौन करे मैंने नीट कर देखो नेक्स्ट कौन रही आमर व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ट्रांसलेशन मेथड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर देखिए कौन ना दिस ग्रामर जो आमर ट्रांसलेशन मेथड रही देखो ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आउ कौन कह जाए जो आमर ट्रांसलेशन मेथड को आम आउ ताको कौन कहि परिबा ना ताको आल्सो कॉल करि परिबा क्लासिकल मेथड बोली आम ताको कहि परिबा जोटा कि आमर इंग्लिश शिक्षण रे। नेक्स्ट देखो कौन रही ना दिस मेथड हैज एंजॉयड a very good reputation amongst the Indian teachers and the students। एठारे कौन करे ना जो मेथड कौन करे ना एंजॉय करे का वेरी गुड रेपुटेशन amongst the Indian teachers and the students। नेक्स्ट देखो कौन रही आमर ना ट्रांसलेशन मेथड मीन्स कौन रही ना टीचिंग द टार्गेट लैंग्वेज आम जो लैंग्वेज को टार्गेट करी यहाँ हूँ आमर ट्रांसलेशन मेथड मीन्स हूँ कौन ना आम जो लैंग्वेज शिखा चाहूँ जोटा कि टार्गेट रखुचे सपोज इंग्लिश हो तेलुगु हो जो जहाँ भी हो ताको आम टार्गेट रखिकी एटा को पढ़ी था हियर इट इज इंग्लिश। एठारे कौन रही ना इंग्लिश को आम टार्गेट करछे बाय ट्रांसलेटिंग इट बाय आम क्या द्वारा ना ट्रांसलेटिंग करने द्वारा। नेक्स्ट देखो कौन रही इनटू मदर टंग यह क्या द्वारा ना इट इनटू मदर टंग द्वारा आम जो मातृभाषा रही मातृभाषा द्वारा आम केमी इंग्लिश लैंग्वेज शिखा। देखो देन कौन रही द टीचर ट्रांसलेटेड ईच वर्ड एंड सेंटेंस इनटू द मदर टंग दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। Neither the teacher nor the taught have to make extra efforts to learn the target language। ये कौन करे ना देखो एथे कौन कह जाय ना हमर जो टीचर रही है जो ट्रांसलेटेस ईच वर्ड एंड सेंटेंस टू द मदर टंग आम जो मदर टंग मातृभाषार जो वर्ड रही प्रत्येक वर्ड एंड प्रत्येक सेंटेंस को कौन करे एटा को ट्रांसलेट करे। दिस इज वन द सिंपलेस्ट एटा कौन ना बहुत सिंपल वे जोटा कि टीचिंग करि परिया फॉरेन लैंग्वेज को आम टीचिंग करि परिया माने पढ़ी परिया। नाइदर द टीचर नॉर द टॉट हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज। एथरे कौन हुए
ना बहुत ये हो जाए। नेक्स्ट देखो कौन रही ना प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आमर जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रही यार प्रिंसिपल कौन रही चलते देखी ना देखो ये कौन रही फास्ट रही आमर कौन ना ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड स्टडीज एक्सप्लिसिटली ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली एंड देन practiced through translation exercises रही आमर देन रही द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग या आपने स्क्रीनशॉट करके रखी नियंतु नोट करने आशा ही हम तो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु जल्दी जल्दी आउ लाइक जो मैंने करना जब भी आप वीडियो को भल लगे तो लाइक भी कर दिंतु। नेक्स्ट रही देखो कौन द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड एट रीडिंग एंड राइटिंग जो प्राइमरी स्किल रही है से कौन करे ना डेवलप करे कौन ना आम रीडिंग आउ राइटिंग जो पढ़ा आउ लिखा कौशल को से कौन करे डेवलप करें। नेक्स्ट रही कौन ना हार्डली एनी अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल देखो ये कौन कही ना हार्डली एनी अटेंशन एथे जो आम अटेंशन रोज इज पेड टू ए कौन कराया पड़े पेड कराया पड़े स्पीकिंग आउ लिसनिंग स्किल जो शुणा आउ कहबार कौशल को। नेक्स्ट देखो कौन रही आम टीचर करेक्शन इज द ओनली वे टू मेक स्टूडेंट्स प्रोड्यूस द राइट फॉर्म ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज एथे कौन करती ना टीचर जो था कौन ना जो फॉरेन लैंग्वेज अच्छी से आमको करेक्शन करती शिखारे। नेक्स्ट देखो कौन रही द गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज देखो 5 पॉइंट कौन रही ना द गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट रिटन इन द फॉरेन लैंग्वेज एथे आर गोल कौन रही ना आमर जो गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज गोल कौन रही ना आमर जो लर्निंग रही इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एथे कौन ना आमर जो अंडरस्टैंड करने द टेक्स्ट रिटन इन द फॉरेन लैंग्वेज जो टेक्स्ट सब जो अच्छी आमको केमी माने जो लिखारे साहाଯ୍य करें बुझापी एटारे तार मेन हूँ गोल यहाँ रही है। तार कौन रही है नेक्स्ट देखो मास्टरिंग द ग्रामर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इज एसेंशियली इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द रिटन टारगेट लैंग्वेज देखो। नेक्स्ट पॉइंट कौन रही तार ना वोकाबुलरी इज लर्न फ्रॉम बिलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट रही देन रही द मदर टंग इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रही देन रही कौन द पारामाउंट यूज ऑफ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस इज गिवन रही देन देखो कौन रही ना आमर रही देखो एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसलेशन मेथड जो ट्रांसलेशन मेथड आमर एडवांटेज कौन रही देखो। फर्स्ट पॉइंट ये देखो कौन रही ना दिस मेथड इज यूजफुल इन द क्लास इन व्हिच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट रही देन कौन रही चलते देखी नवा। देन देखो कौन रही आमर ना इट इज बेनिफिशियल टू यूज इन द क्लास वेयर देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस लेवल एथे कौन ना जो आमर रही जो क्लासरूम कौन ना वेरियस लेवल स्टूडेंट्स था ठीक अच्छे भेरी इंटेलिजेंट एंड नॉट सो भेरी इंटेलिजेंट किसी इंटेलिजेंट अच्छा आउ केते जण इंटेलिजेंट नहांती। देन देखो कौन ना इट हेल्प्स द टीचर टू क्लियर द मीनिंग ऑफ ए वर्ड एंड सेंटेंस इजिली बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू द मदर टंग यह कौन करता है ना यह हेल्प कौन करता है ना टीचर को कौन करता है ना क्लियर द मीनिंग ऑफ ए वर्ड जो आमर वर्ड अच्छी सेंटेंस अच्छी इजिली मैंने ट्रांसलेटिंग करी क्लियर करने इट इनटू द मदर टंग आमर जो मातृभाषा द्वारा माध्यम। नेक्स्ट रही कौन द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स भेरी इजिली स्टूडेंट कौन करती ना आमर जो थिंग को भेरी अंडरस्टैंडली से बुझी था इफ टॉट यूजिंग दिस मेथड जदि यही मेथड द्वारा से यूज करती तो से बुझापी बहुत इजी होता है। नेक्स्ट देखो कौन रही नेक्स्ट 5 पॉइंट ना इट डज नॉट कंज्यूम द टाइम इन फिनिशिंग द सिलेबस रही देन देखो कौन the practice picture of the words and the things are made into the minds of the learners through this method। नेक्स्ट देखो कौन रही ना दिस ट्रांसलेशन मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ये जो मेथड आमर कहाँपाई माने बहुत भल यूजफुल होता है ना आमर बोथ एवरेज और नॉट बिलो एवरेज स्टूडेंट मानी आमर एटा कौन होता है ना यूजफुल होता है। नेक्स्ट देखो कौन रही ना डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखो ये कौन रही आमर ना देखो फर्स्ट पॉइंट रे कौन रही ना नो ओरल वर्क टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम ड्यू टू दिस मेथड ये जो मेथड रे कौन होता है ना आमर जो क्लासरूम रे कौन होता है नो ओरल वर्क टेक्स प्लेस आमर कौन भी ओरल वर्क हो न थाए। देन रही कौन देखो द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोर्ड होता है। देन रही कौन ना नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज पॉसिबल एथे आमर कौन भी जो अच्छी आमर स्पीकिंग जो टारगेट आमर जो टारगेट रही जो लैंग्वेज इज पॉसिबल से आमर स्पीकिंग टी ना द ओनली ट्रस्ट रिमेन्स ऑन द रीडिंग एथे कौन ना ओनली केवल रीडिंग उपर फोकस कर माने टारगेट कर। देन देखो कौन रही द स्टूडेंट्स डोंट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द लार्जेट सॉरी टारगेट लैंग्वेज देइचंती एथरे कोन देइचंती हमर स्टूडेंट मानकर जो डेवलप एथरे पावर ऑफ थिंकिंग को एथरे जो देना हंदी हैला ये जो टारगेट लैंग्वेज को देना हंदी। देन देखो कौन ना इट डज नॉट हेल्प यह हमको हेल्प करी न थाए कौन ना द स्टूडेंट टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यह हमको हेल्प करी न थाए कोथरे ना प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो हमर प्रोनाउंसिएशन अछि सेथरे हमको कोनोसी भी हेल्प करी न थाए ए जो लैंग्वेज रे। देन देखो कौन रही ना द मेन एम्फासिस इज गिवन ऑन द रूल्स
of grammar ଦେଇଛି main emphasis କ'ଣ ନା given in the rule of grammar ଉପରେ ଦେଇଛି then ରହିଛି କ'ଣ ନା students try to do everything by translating ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ student ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା try କରନ୍ତି କ'ଣ ନା translation ରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି try କରିଥାନ୍ତି then ରହିଛି କ'ଣ ନା this method does not involve the students mentally and just like storytelling method ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର method ରହିଛି ଏଥିରେ don't involve ଏଥିରେ involve ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ student mentally and just like storytelling method ରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା involve ହୋଇନଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବିଗିନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ୱି ୟୁଜ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇନର୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ make sense of complex and abstract thought, to learn to communicate with others, to fulfill our wants and needs, as well as to establish rules and maintain our culture ଉପରେ ଏହା ରହିଥାଏ then ରହିଛି କ'ଣ ନା language can be defined as verbal physical ଆମର ଯେଉଁ languageଟା ଥାଏ କାହା ଉପରେ define କରେ ନା verbal physical biological innate and a basic form of communication ଏଇଟା କ'ଣ ନା communication ଉପରେ ବି define କରିଥାଏ then ରହିଛି କ'ଣ ନା when we define language we have to be careful not to exclude symbols signal and motions this is because if we exclude this from our definition we will be define the language of the deaf community तो यह मध्य रही है नेक्स्ट देखो तार डेफिनेशन गुड़िक कौन देखी ना द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटेन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड इन ए स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे देखो देन रही कौन ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी नेक्स्ट पॉइंट कौन रही ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ इलॉजिकली वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स रही हमर एतरे देन रही देखो कौन रही हमर ना वी कैन डिफाइन लैंग्वेज as a system of communication using sounds or symbols that enables use to express our feelings thoughts ideas and expression एथर कोन कहछि ना हम ए लैंग्वेज को डिफाइन करी कोन ना कम्युनिकेशन करी थांती आ कोन ए सिंबल द्वारा कोन करथांती ना हमर जो फीलिंग्स अछि ताको एक्सप्रेस करथांती थॉट आइडिया एक्सपीरियंस आको हम कोन करथांती एक्सप्रेस करी थांती देन रहछि कोन ना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी समस्त जानिथिबो सेटा डिफाइन कोन कहछि ना लैंग्वेज एज वर्ड्स एंड द मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम ये कोन कहछि ना वर्ड एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ये थॉट्स को जो एक्सप्रेशन करे बोली देछि के ऑक्सफोर्ड देन रही कौन अकॉर्डिंग टू एलेन का मतरे कौन लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेटिव थॉट्स ये सब मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट कारण आपने ओटीटी जिते पेपर 2 देवे कि ओएसटीटी हो तो ये मेनली पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो ताको आपने मन रखिले बहुत भल हम तो देखी ना कौन ना अकॉर्डिंग टू एलेन का मतरे कौन ना लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेटिव थॉट्स देन रही आमर कौन अकॉर्डिंग टू बलिंगर रही मतरे कौन ना लैंग्वेज इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक रही देन रही कौन ना अकॉर्डिंग टू एस ए लेसन रही लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देन कौन रही ना अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन रही कौन देखते ना लैंग्वेज मोस्ट शोज ए मेन स्पीक दैट आई मे सी दी द देन रही कौन ना देखो कौन रही ना लियोनार्ड जो ब्लोमफाइड रही मतरे कौन ना ईच कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज रही देन देखो कौन ना नेचर ऑफ अ लैंग्वेज आमर लैंग्वेज नेचर कौन रही देखी नियंतु लैंग्वेज इज ए लर्न आर देखिए चलते कौन रही देखो पूरा मो डेफिनेशन सहित आपने नहीं आसी तो आपने स्क्रीनशॉट करके रखी दिंतु पढ़ाई नोट करके सुविधा हेबो तो पूर्व लाइक जदि करना लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिंतु जहाँफल मुझे मोटिवेट हो आप नुआ नुआ वीडियो नहीं आसबे नेक्स्ट देखो बहुत खुशी लगे पे कहती मैम फिलोसफिकल दिंतु कि सोशियोलॉजी रो केबे छाड़िबे कि मैम ए क्लासटा करंतु तो बहुत खुशी लगे तो आपण मानको सेति कहूँ लाइक शेयर कमेंट करंतु जहाँफल मुझे मोटिवेट होगी आपण जमी इंटरेस्ट है कि नुआ नुआ सब वीडियो बन पारि ए रिलेटेड नेक्स्ट देखो कौन रही हाँ आम कौन देखले ना लैंग्वेज इज लर्न देखले तो आर कौन रही देखो डेफिनेशन ना लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस लाइक वॉकिंग एंड क्राउलिंग दैट कम्स टू चाइल्ड इन नेचुरल वे देन रही कौन ना लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस रही लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट इफोर्ट्स रही देन कौन रही हमारा सेकंड पॉइंट लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी रही एथरे कौन रही ना एवरी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी टू व्हिच इट बिलोंग्स the culture of the people naturally influences the language every language is a product of society then रही कौन ना language is class of specific रही देखो आमर जो language रो जो class गुड़ा रही है कौन specific language is class of specific only human beings have got the gift of language only human being can make use of language रही then देखो कौन रही
na language is specially uniform ରହିଛି କ'ଣ na language is special uniform all human children are capable of acquiring any language natively if they are provided the right kind of environment then ରହିଛି କ'ଣ na language is a system କ'ଣ ରହିଛି na each language is a unique system the system of language consists of sounds structures and the and vocabulary each language has its own system of vocabulary thus each language is systematic ରହିଛି then କ'ଣ ରହିଛି na language is a systems ରହିଛି କ'ଣ na there are pronunciation and grammatical systems in all languages there are several subsystems within a language the pronunciation of a language forms its own system as the various sounds function in a systematic way then ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା then ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା symbols of language are vocal ରହିଛି କ'ଣ ନା there are other visual symbols auditory symbols are not vocal symbols they do not form any language in language the sounds are produced through vocal ରହିଛି then ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର then ରହିଛି ଆମର organs reading and writing are not doubt important ରହିଛି but speech is the basic form of language a language without speech is unthinkable ରହିଛି then 8 point କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ନା language is a skill subject ରହିଛି learning of a language is a skill subject we can learn a language by constant practice like listening speaking reading and writing of the language is required then ରହିଛି କ'ଣ ନା language is a for communication ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା language is the best means of communication and self expression human beings express their idea thoughts feeling and emotions through language in this way language is a means to connect past present and future then kon roichi then roichi amara governed by a particular set of rules roichi ethre kon roichi na each language is governed by a particular set of rules for example english is a sub verb object language to create a sentence whereas in hindi it is sob to create a sentence then देखो कौन रही आमर ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज कौन रही आमर देखो लैंग्वेज इज डायनामिक रही लैंग्वेज हैज लेवल्स रही लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड यूनिक रही लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन रही लैंग्वेज आइडेंटिफाइज कल्चर रही लैंग्वेज इज आर्बिट्रारी रही देखो कौन देखा आम एम्स एंड स्कोप देखा चलतु फास्ट कौन रही आमर देखो एथर कौन रही ना टू पब्लिश द मोस्ट रिसेंट लिंग्विस्टिक फाइंडिंग्स at national and international level एथर कौन रही ना जो आम पब्लिश होती रिसेंट जो लिंग्विस्टिक फाइंडिंग एथर कौन नेशनल इंटरनेशनली लेवल रही देन देखो कौन सेकेंड पॉइंट रे ना टू प्रोवाइड ए वेन्यू फॉर एक्सपर्ट्स to provide a venue for experts in the field of applied linguistics to exchange their ideas to improve the quality of English language teaching then roichi kono na to publish experimental research focusing on the problems of Persian speaking learners of English roichi then roichi kono na to benefit from the experiences of experts in the field in an attempt to provide solutions for the problems of EFL learners roichi then देखो कोन roichi amaro then देखो क्वेश्चन कोन ना why should ELT be published amar जो ELT roichi एटा कोन पे पब्लिश होइछि देखंतु कोन रहिछि द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ जस्टिफाई द नीड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ELT तारो नीड रहिछि देखंतु ELT रो पब्लिकेशन नो नीड कोन रहिछि देखंतु द सफिशिएंट नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल्स इन ईरान स्पेशली फोकसिंग ऑन अप्लाइड रिसर्च देन रहिछि द नीड टू एनकरेज ELT रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स टू कैरी आउट मोर रिसर्च इन द फील्ड रहिछि देन रहिछि द विलिंगनेस ऑफ इरानियन रिसर्चर्स टू गेट देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश्ड इन ईरान जर्नल्स देन रहिछि कोन ना कंपटीशन एमंग इंग्लिश लैंग्वेज teaching journal and the improvement of the standards of manuscript publication रही then रही कौन ना find more papers on this topic on study mode ये देखो नेक्स्ट कौन रही आमर ना स्कोप ऑफ इंग्लिश रही चलते देखी ना देखो एथर कौन रही आमर following factors develop the scope of English language in India देखो English studies in India कौन रही ना India has no common language across the country for better understand and communicate all part of country English study has been introduced in India या कौन होइतिला इंडिया सहित इंट्रोड्यूस होइतिला आर कौन ना कम्युनिकेशन कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री ए कंट्री भितर कौन आर कौन भी कॉमन लैंग्वेज ना फॉर बेटर अंडरस्टैंड आउ कौन कम्युनिकेशन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री आमर इंग्लिश कौन होता है इंग्लिश शिखा आवश्यकता होता है देन देखो कौन रही इंग्लिश इट्स पोजिशन इन द ग्लोबल एरिया देखो कौन रही ना इंग्लिश ऑक्युपाइज एन इंपोर्टेंट पोजिशन इन ग्लोबल एजुकेशन एट द मोमेंट बुक्स नोट्स ट्रिक्स मेथड्स प्रिंसिपल्स प्रोसेस रूल्स रिसर्च आर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एटा कौन होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज रे अवेलेबल होता है देन देखो कौन रही ना आमर इंपोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया एथरे कौन रही ना असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंडिया बीइंग ए मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल कंट्री हैज हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज इट्स असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इज दस ए विंडो लैंग्वेज फॉर दोज हु नॉट नो हिंदी और हुज मदर टंग देखो एथरे कौन रही
ना आमर जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया कौन ना आमर ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया आउ मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल कंट्री हिंदी इज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज इट्स असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इज दस ए विंडो लैंग्वेज फॉर दोज हु डू नॉट हिंदी और हुज मदर टंग देन देखो कौन रही ना इंग्लिश इन इंडिया रे कौन रही इंग्लिश इन इंडिया इन आवर कंट्री इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ए पर्सन ऑफ तमिलनाडु डज नॉट स्पीक हिंदी so he can't understand Hindi of a person for North India, however he can understand in English. So देन देखो कौन रही ना ग्लोबलाइजेशन रही ग्लोबलाइजेशन कॉल सेंटर एंड लैंग्वेज रही देखो ये कौन रही ना ग्लोबलाइजेशन कॉल सेंटर एंड लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज एक्सिलरेटेड मॉडरेशन मॉडर्नाइजेशन इंटरकनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैविलैंड प्रिंस वेल्थ एंड एमसी ब्राइड 2008 देखो ये कौन रही ना ग्लोबलाइजेशन हास्टेन द इंटेंसिफाई collaboration and in cooperation among different nations citizens business then रही कौन ना इंग्लिश एज यूनिवर्सल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कौन रही इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन रही ना इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल आई एम हियर टू देखो ये कौन रही आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज taught to us right from our birth. English is not just taught at home, at school and college, but even at professional colleges. Then रही देखो कौन ना इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन रही देखो कौन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल स्टाफिंग द्वारा कौन रही ना इंट्रोडक्शन द डाटा एंट्री डिविजन हैज डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ मूविंग इट्स डाटा एंट्री फंक्शंस टू इंडिया. द फॉलोइंग information will help the company make that decision. The industry data entry and information processing workers help ensure the smooth and efficient handling of information रही देन देखो कौन ना इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज देखो एथर कौन रही चलो देखो एथर कौन रही ना इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज बाय बिगिनिंग in these modern times there is one language that connects peoples and countries all over the world and makes it possible to communicate over borders more than any other languages. The language is as well as all know English. If we are to find the origin of the then रही कौन ए comprehensive history of computer language कौन रही आमर एते ना ए कंप्यूटर ना compression history of computer language देखो ए comprehensive history of computer language. The history of computer language can be traced back to the 1940s. In that day the primitive nature of computers focused programs to write hand turned assembly code. This was tedious and demanding. In 1948 a man named Conrad Joss published a paper. Then देखो कौन रही आमर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कौन रही ना थ्रो आउट आवर लुक एट इंग्लिश एंड द intricacies of communicating within it. One area has until recently received little attention, and that area is SMC or short messaging service, also referred to as texting. Initially intended for purely commercial purpose, text messaging is in fact yet another. Next रही कौन ना impact of the internet on journalistic English. एथरे कौन रही ना how is the internet language a new form of both speech and writing being used around the world. I will show where journalistic English has come from, how the internet has impacted communication, and where English is involved too. My analysis of the language of journalistic English and the internet will. Then रही कौन ना English as a global language. एथरे कौन रही आमर ना English as a global language. English was first spoken in medieval England, what we now know as England, by the Angles and the Saxons. At the end of the 16th century, there was about 5-7 million people who talked English in England. ये कौन इंग्लैंड रे कौन ना 5-7 मिलियन जो लोक अच्छा से टॉक करते कौन ना इंग्लिश भाषा से यूज करता. देन देखो इंग्लिश इज नाउ द लैंग्वेज दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द होल. एबे कौन हो इंग्लिशटा सारा देश में पूरा माने पूरा वर्ल्ड रे कहया गले. देन देखो कौन ना इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंपोर्टेंट कौन देखो ये ना इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बाय रेव लेट जॉन बुनेन रही कौन ना सी कौन थे ना एमए थे बार्गन स्कूल कोतराम तमिलनाडु थे साउथ इंडिया से थे. से कौन मत कौन ना इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज. इट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल. ये कौन पूरा यूनिवर्सल एंड वर्ल्ड रे थिला. The world communication is possible only through the language English. A man can go around the world without any difficulty. यदि गोटे मनीष इंग्लिश लैंग्वेज टी जानी वर्ल्ड से जेकोसी स्थान को जाऊ तो तापे किसी असुविधा हेबो नहीं. देन रही कौन देखो डीलिंग इन इंडिया कौन रही एथरे एल प्रोफेसर देखो जे लैंग्वेज कौन देइचंती ना 242 देइचंती 28 में
2013 रे कौन करथिले ना डीलिंग इन इंडिया इज ए पॉपुलर कंट्री टू डू बिजनेस मेनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज आदरे केते ना 500 कंपनीज अछि हैव आउटसोर्स जॉब्स टू द कंट्री in recent years. This newfound popularity has made it ever increasingly important to have knowledge of the business culture. Then रही कोन ना the cinema of India कोन रही ना introduction to cinemas. The cinema of India consists of films produced across India, including the cinematic culture of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Jammu. Then कौन रही देखो देन रही कौन ना काश्मीर कर्नाटक केरल महाराष्ट्र ओडिशा पंजाब तमिलनाडु एंड वेस्ट बेंगल इंडियन फिल्म्स केम टू बी फॉलोड थ्रू आउट देन रही कौन ना इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंपोर्टेंट देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट देखो कौन रही आमर इंग्लिश लैंग्वेज इंपोर्टेंट देखो फर्स्ट वन देखो इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट नेशन व्हिच लीड्स क्लोजर एंड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एमंग दोज पीपल देन सेकंड पॉइंट कौन रही ना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज देन रही कौन ना इट प्रोवाइड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड सब मैंने जो मैंने एम्प्लॉयमेंट खोजुंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी then कौन है ना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज देखो आम जो टेक्नोलॉजी रही कंप्यूटर प्रोग्राम हो सॉफ्टवेयर हो एमाने कौन केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही से रही देन देखो कौन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश आमर कौन ना या गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज सच एज इन इंटरनेशनल गेम एयर ट्रैवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल स्टडी टूर एटसेट्रा देखो इंग्लिश कौन आमर एटा गोटे हूँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज एटा कौट यूज करते ना इंटरनेशनल प्रत्येक क्षेत्र में ट्रैवल करूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो मीटिंग हो सब क्षेत्र में यह निहाती आवश्यक होता है देन देखो कौन 6 पॉइंट अच्छी ना स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रोड फॉर एजुकेशन विल हैव टू लर्न टू इंग्लिश वेल जो मैंने अब्रोड जावाई चाहते जो स्टूडेंट मैंने एजुकेशन बेटर एजुकेशन तो से कौन ना इंग्लिश शिखिथिबा निहाती आवश्यक रही देन रही देखो कौन ता भितर ना इफ देयर कमांड ओवर इंग्लिश इज पुअर देन दे मे फेस डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग विथ द एलियन एनवायरनमेंट तो जदि से इंग्लिश लैंग्वेज रे पुअर अच्छा माने कमजोर अच्छा तो सेठी एडजस्ट करके रही बहुत कष्ट होता है से जो एनवायरनमेंट रे रहिबा बहुत मुश्किल होता है कारण जी तो जीव ता मातृभाषा ही लैंग्वेज रे ही कथबार्ता कर तो से जेहेतु इंग्लिश लैंग्वेज कहते तो सेठी एडजस्टमेंट करिया कौन होता है ना प्रॉब्लम होता है डिफिकल्ट होता है देन देखो कौन रही ना इंग्लिश लैंग्वेज हैज ए ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल अपील फॉर पोएट एंड राइटर्स ऑफ नेटिव लैंग्वेज होता है देन रही 8 पॉइंट कौन ना द लैंग्वेज ऑफ हॉलीवुड रही एथरे कौन रही आमर देखो ना एवरीवन नोज दैट देखो ये मुझे बड़ कर दूसरी देखो एवरीवन नोज दैट हॉलीवुड इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द बिगेस्ट टेलीविजन एंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड आर बेस्ड देयर एज आई मेंशन्ड एबव देखो आमर जो लैंग्वेज हॉलीवुड हो कि बॉलीवुड हो जो आमर होची सेठी भी आमर इंग्लिश लैंग्वेजटा ही यूज होता है देन देखो कौन रही ना आमर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिजनेस आमर लैंग्वेज टी होता है मुझे बेसी आउ किसी एक्सप्लेन करूनी आपने स्क्रीनशॉट नहीं जातु खाली आपको टी लाइटली ही कहीदे देखो नेक्स्ट देखो कौन ना स्टाटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया देखो ये कौन देखिए आमर ना डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश आमर जो टीचिंग इंग्लिश जो पोजिशन रही डिस्क्राइब करने कहुई देखो ये कौन रही आमर ना इंग्लिश इज नोन स्पोकन एंड रेड बाय ऑल एजुकेटेड पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड चिल्ड्रेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड स्पीक दिस लैंग्वेज इन देयर स्कूल आइदर एज द मदर टंग और एज द फॉरेन लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हुज मदर टंग इज नॉट इंग्लिश लर्न दिस एज ए सेकेंड लैंग्वेज फॉर इट्स कल्चरल एंड यूटिलिटेरियन वैल्यूज द पीपल ऑफ इंडिया नो एक्सपेक्टेशन टू इट देखो ये कौन कहुई ना इंग्लिशटा प्राय समस्ते ही जानी था स्पोकन आउ इंग्लिश करने समस्ते जानते जो मानकर मदर टंग इंग्लिश से जानते आउ जो मदर टंग नुहे इंग्लिश तो से डेफिनेटली सेकेंड लैंग्वेज होता है नेक्स्ट देखो कौन रही इनिशियली इंग्लिश वाज ओनली टॉट टू द लोकल पॉपुलेशन थ्रू द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज देयर वर नो ऑफिशियल अटेम्प्ट्स टू फोकस द लैंग्वेज ऑन द masses बट बाय द 1700 इंग्लिश हैड firmly established itself as the language of administration and many educated Indians were demanding instruction in English as a means of social advancement. By 1857 universities had opened in Bombay, Calcutta and Madras. English was increasing acceptable as the language of government, of the social leaders and of the national phrase. Then रही देखो कौन ना पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर इंडिपेंडेंस पूर्व आमर इंग्लिश लैंग्वेज कौन पोजिशन थिला तो देखो ये कौन रही ना इट वाज द फास्ट लैंग्वेज इन होल कंट्री कौन थी ना फास्ट लैंग्वेज थी इंग्लिश थी केवे ना इंडिपेंडेंस बिफोर थी इट वाज कंसिडर्ड एज द क्वीन ऑफ लैंग्वेज ये कौन थी ना आमर क्वीन ऑफ लैंग्वेज थी या आम कंसिडर करूँ क्या रूप ना क्वीन ऑफ लैंग्वेजेस उपर देन रही कौन ना इट वाज द वेहिकल ऑफ थॉट एंड एक्टिविटी देन रही इट वाज द प्राइड ऑफ ऑल देन रही इट वाज द मीडियम ऑफ स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज देन कौन रही देन देखो कौन रही ना पीपल वे आर इंटरेस्टेड टू रीड अदर सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम देन रही इंग्लिश वाज टॉट बाय इंग्लिशमैन ओनली देन रही इंग्लिश स्टडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द जॉइनिंग डे ऑफ स्कूल देन रही कौन ना इंग्लिश वाज कंसिडर्ड एज द पासपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट
देन देखो कौन रही आमर इंग्लिश इज एक्सेप्टेबल एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया इंडिया रे कौन होइछि ना इंग्लिश को आम को ये एक्सेप्ट करछंती ना सेकेंड लैंग्वेज रे एक्सेप्ट करछंती इन द वर्ड ऑफ गांधी इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स देन रही इट इज द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट कंटेन्स मेनी रिच लिटरेसी ट्रेजर्स देन देखो कौन रही then रही it gives us an introduction that English has occupied an important place in India education then रही कौन ना the national policy of education 1986 and revised देखो कौन रही 1992 रे आकु रिवाइज करा है रिकमेंडेड करा जायतिला इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन सेकेंडरी स्कूल्स सेकेंड लैंग्वेज कौन करा जायतिला ना सेकेंडरी स्कूल पे माने करा जायतिला आउ थरे ताकु रिवाइज करा हला केबे ना 1992 रे देन देखो कौन रही ना आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पर कौन रही देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स इन 1947 इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स नेशनल लैंग्वेज हिंदी को कौन करा जायतिला ना इंडिपेंडेंस पर हमर हिंदी लैंग्वेज को कौन करा जायतिला ना नेशनल लैंग्वेज हिसाब रे घोषणा करा जायतिला देन देखो कौन इंग्लिश वाज आल्सो द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑल बीइंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज सिमिलरली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल हायर एजुकेशन वाज आल्सो इन इंग्लिश इट वाज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड चेंज टू हिंदी ग्रेजुअली कौन कह जाए ना ना आमर तो हिंदी लैंग्वेज को घोषणा करागला माने नेशनल लैंग्वेज रूपे देन इंग्लिश वाज आल्सो द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑल बिग जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो आमर बड़ बड़ सब स्टॉक कंपनीज अच्छी से यूज करने दिगला सिमिलरली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल हायर एजुकेशन वाज आल्सो इन इंग्लिश सब हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश को यूज करने कहगला देन रही कौन ना इट वाज डिसाइड टू कंटिन्यू विथ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज देन कौन करागला ना आपको डिसाइड करागला जे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में यूज करने then कौन रही ना चेंज टू हिंदी ग्रेजुअली हिंदी वाज प्रॉब्लम टू प्रोफिशिएंट पर्सन इन इंग्लिश एंड नॉन हिंदी मदर टंग पीपल आफ्टर सो मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन सम टोटल इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी द मेन लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट वर्क्स तापर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एंड हायर एजुकेशन also English is used widely in addition to Hindi and regional language by people from higher strata of society. As a result you will find a wide percentage of India people who are multilinguistic. Then रही कौन ना दिस सिचुएशन डेफिनेट हर्ट्स नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल बट इन द वेक ऑफ ट्रेंड फॉर ग्लोबलाइजेशन पीपल आल्सो सी द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए लार्ज पूल ऑफ पीपल इन इंडिया हु कैन स्पीक इंग्लिश दिस हैज डेफिनेटली हेल्प्ड इंडिया इन जनरली टू डू बिजनेस ग्लोबली इन एडिशन इट हैज आल्सो गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज इन सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ये होगा तापर आम देखा कौन नेक्स्ट क्लास देखा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो रही है नेक्स्ट क्लास देखा आई होप आपण मानक आज क्लास टी बहुत भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट करने भी जमारू भी भूलु नहीं जदि आम चैनल को नुआ कर आम चैनल ने बहुत आगु देखुं तो आपण मैंने सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आपण मैंने नुआ नुआ वीडियो जो आसो आपण मैंने पाइपर तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग तो सी यू नेक्स्ट क्लास।